A major flood threat in Odisha has now subsided, bringing relief across the state. Officials from the Water Resources Department confirmed that the water levels of most rivers have dropped below the danger mark. The only exception is the Jalaka River, which continues to pose a risk to some areas in the Basta region of Palesore district. The Baitarani River, which had earlier raised concern, is now showing improvement. At Akhuapada in Bhadrak district, the river is flowing at 18.24 meters. According to the department's forecast, the level is expected to drop further and fall below the warning level by tomorrow. Just yesterday, the Baitarani peaked at 18.4 meters before gradually receding. Meanwhile, the Hirakud reservoir has recorded a rise in its water level due to heavy rainfall in its upper catchment. To manage the situation, authorities have opened 20 sluice gates, releasing water into the Mahanadi River. The chief engineer stated that around 4.5 lakh to 5 lakh cusecs of flood water are expected to reach Mundali by September 7. जलका को छाड़देले आउ कौन सी नदी में बर्तमान बन्या परिस्थिति नहीं जोटा गतकाली बैतरणी थिला से विपद संकेत तलू से चलीगला तेणु बर्तमान आखुआपदार जोटा थिला आम गतकाली से 18.4 मीटर जाए गला जोटा कि आमर विपद संकेत जोटी अच्छी 18.33 मीटर सेठू जाकि 5 घंटा से रहीकि तलू आसिकी बर्तमान 18.24 अच्छी एवं आम आशा करुचु जे आगामी काली पाहांता बेलू सेटा सतर्क संकेतर तलू आसी जाइथिबो ताकू छाड़देले आमर अन्यान्य स्थान रे कौनसी प्रकार सेमती स्थिति नहीं सब गुड़ाक कंफर्टेबली विपद संकेत तले प्रवाहित होउची बालेश्वर बस्ता एरिया रे सेटा जलकार जोटी अच्छी से जगह टिके इम्पैक्ट हम बट जलकाटा बहुत छोट नदीटे आप जानते आठी बहुत लिमिटेड तार माने इम्पैक्ट एरिया हम महानदी रे मुझे आपको कहली 20टा गेट देखिए आमर बन्या जल निष्कासन होची हीराकुद डैम रू सेटा पहुँचा आम 7 तारिख रे आम आशा करूँ 4.5 लाख रु 5 लाख मुंडली रे प्रवाहित होतु।